So dear participant, Azadi sir has already explained to us that to achieve something in life, the aim of education, we need to build capabilities. ये जो सक्षमता है वो हमें खुद में विकसित करना, अपने आप में उसका विकसन होना बहुत जरूरी है. So the part that we will be covering in this particular session is concept and skills. तो उसकी जो व्याख्या है, कॉन्सेप्ट है और जो स्किल्स है, कुशलताएं हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं. So why do you need to build capabilities? This could be a question in your minds कि ये जो सक्षमता है, उनका जो विकास है, उनका खुद में जो विकास है, वो करना क्यों जरूरी है? So to be able to achieve the aim of education. So what are the aims? We have already discussed few of them in Azadi sir's session right now. So to empower yourself, whether you're a student, you're a teacher, आप कौन से भी उम्र के हो, but you need to empower yourself. You need to develop yourself further. You should be able to contribute for the social progress. That is the aim of education. अभी हमने जो discussion किया, आजादी सर ने बहुत beautifully he has explained that what is the aim of education and how we should be able to contribute towards the social progress as well. So हमारा खुद का तो विकास जरूरी है, पर उसके साथ ये जो हमारा संपूर्ण समाज है, उसके लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत है. और वो सब अगर हमें हासिल करना है, तो हमारे खुद में हमें जो सक्षमताएं हैं, उनका विकास करना बहुत जरूरी है. So this is the reason why we need to build capabilities. So what is capability building? Now, in Bahai Academies, all the modules, all the programs that we have, we clarify capability building as 5 elements. All right. So 5 elements are there important to build your capabilities. So first element is clarity of concept. जो संकल्पना होते हैं, उनका स्पष्टता, उसका स्पष्टीकरण आपको पता होना चाहिए. स्किल्स जो कौशल है, कुशलताएं हैं, वो खुद में आप विकसित करना जरूरी है. स्पिरिचुअल क्वालिटीज, आध्यात्मिक गुण जिसे हम कहते हैं, उसको हम दैनंदिन रोजाना जीवन में उसका विकास करना बहुत जरूरी है. क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है कि हमारे जिंदगी में जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, कभी कभी ये जो आध्यात्मिक गुण का जो एलिमेंट है, वो कभी कभी कम होने लगता है. तो उसका विकास करने के लिए ये जो सक्षमता है, वो बहुत जरूरी है. राइट एटीट्यूड्स, आपका रवैया कैसा है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे विचार करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे बात करते हो, कैसे प्रतिसाद करते हो, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है. और इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी जरूरी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी आपको जरूरत होती है. So these are the 5 basic elements of capability building. So हमारा जो प्रोग्राम है बहाई एकेडमी का, वो इस capability building पर आधारित है. So which is the most essential moral capability? अभी we are going to discuss about आध्यात्मिक, ये जो नैतिक सक्षमताएं हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं. So which is the most essential moral capability that you need to build and develop? So it is uprightness. Okay, जिसे हम हिंदी में नेकी कह सकते हैं. So नेकी से जीना, ये जो सक्षमता है, ये जो नैतिक सक्षमता है, वो सबसे जरूरी होती है, और उसके ऊपर हम अभी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं. So dear friends, what is uprightness? Again, the question might come into our minds. So many ideas may come to your mind when you hear this word, neki ye shayari hogi. So can you please write in the chat box, what do you think, what is uprightness according to you? Neki का मतलब आपके हिसाब से क्या है? You can write your answers in the chat box. Yes. So what is uprightness? What do you think? According to you, whatever the thoughts that come into your mind, you can just write it in the chat box. Yes, Parag ji has already typed the question over there. What is uprightness?
डियर फ्रेंड्स, जैसे कि साइली मैडम ने यहाँ पे बताया कि अपराइटनेस का मतलब क्या है, कि आप क्या आपके दिमाग में पहले थॉट्स आते हैं जब आप नेकी ये शब्द सुनते हैं. सो व्हाट आइडिया कम्स इन योर माइंड व्हेन यू first hear this word uprightness? Okay, madam, answers have started coming. So think Right. doing and being good to others. Is it, somebody is asking the Okay. question, is it to be bold? Okay, that we will clarify this thing. Then to be honest and respectful and also honorable, and being honorable, help anyone, to be straightforward. Okay. डॉक्टर रविंद्रनाथ जी बताते हैं. Okay. ओके, देन तस्लीमा जी बताते हैं कि डू गुड विद पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग. लोगों से किसी प्रकार की जो अपेक्षा है वो न करते हुए हमें अच्छी तरह से बिहेव करना है. देन क्वालिटी टू बीइंग ऑनेस्ट प्योरली, मधुलिका जी यहाँ पे बताते हैं. So we are getting Wonderful, interesting wonderful. answer. Thank you so Yes. much, dear friends. Yes, thank you. We don't have too much of time, so we won't be able to have all everybody's answers. But thank you so much. You have expressed it so beautifully, and we will discuss about this. Whatever points that you have right now expressed, we will be talking about all these points. So, dear friends, as you all have written, uprightness is also referred to as rectitude of conduct, जिसे हम सदाचरण कहते हैं. So, अभी आपने जो जो अलग अलग उत्तर दिए हैं उसमें कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, दूसरों को मदद करना है और उसी हिसाब से बहुत प्रामाणिकता से आपको बिहेव करना है. सो ऑल दिस टुगेदर, ऑल दीज स्पिरिचुअल क्वालिटीज एंड द प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग पुट टुगेदर इज सदाचरण. सो रेक्टिट्यूड ऑफ conduct. Thank you so much, dear friends, for giving all those beautiful answers. So, सदाचरण या रेक्टिट्यूड ऑफ कंडक्ट के लिए एक फैमिलियर इमेज हम लोगों के, एक कल्पना है जो हम लोगों के सामने आ जाती है. What is this familiar image? It is walking the straight path. You know, it is there in many of the cultures and in many houses also. Very commonly we say, oh, सीधे रास्ते पे चलना है, हाँ, यहाँ वहाँ नहीं जाना है, हमारा जो रास्ता है वो हमेशा सीधा होना चाहिए. Probably in the elders in the family, you must have also heard that they say walking the straight path. So rectitude of conduct is to understand. This image is just for us to understand ki what do we mean by rectitude of conduct is walking the straight path in our life. But friends, to be able to walk the straight path and not to deviate from it, you should be able to see it, isn't it? आपके सामने जो रास्ता है, वो सीधा जो रास्ता है वो आपको दिखना भी चाहिए और आप इधर उधर भटकने नहीं चाहिए, आपने शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए. तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? So इसके लिए ऐसा कहा जाता है, the only light that can illuminate this path is the light of truth. सत्य का जो प्रकाश है हमारे जीवन में, अगर सत्य का प्रकाश है तो हमें ये जो सीधा रास्ता है वो बहुत आसानी से दिखता है और हम इससे भटक नहीं पाते हैं. Because this light of truth shows us the right direction. It shows us the right path, and it shows us the straight path which we should follow, the moral path which we should follow in our day-to-day lives. Right. So what are these lights that we are talking about? ये जो सत्य का जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है? There has to be something. So these come from the lamps of principles. Dear friends, when we follow principles in our lives, then the light of truth shines. We can see it very clearly. So what are the principles? We had little discussion during Azadi Sir's session also, but here we have given a few examples of these principles like truthfulness, satyavadita, honesty, ईमानदारी, justice, न्याय, love है जो प्यार प्रेम, sincerity है, fidelity है, निष्ठा. तो ये सब जो है ये प्रिंसिपल्स है, ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिनका पालन हम अगर करते हैं तो हमें सत्य का प्रकाश दिखता है और उस हिसाब से हम जो हमारा सीधा रास्ता है उसके ऊपर चल सकते हैं. बट अगेन, question might come into all our minds, but which has been already kind of clarified by Azadi sir. What are principles? Are the inventions of human mind? किसी ने एक दिन ऐसे डिसाइड किया कि नहीं आज मुझे कुछ ढूंढना है और मैंने प्रिंसिपल्स इन्वेंट किए हुए हैं. सोशल कन्वेंशंस है, सामाजिक कुछ बंधन है या पॉलिटिकल नॉर्म्स है, क्या राजकीय कुछ किसी ने डिसाइड किया हुआ है? सो डियर फ्रेंड्स, नो, दे आर नॉट. They are the laws
that govern the physical and non-physical world. You know, हमारे प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, वो जो निर्माण है ये इन नियमों से हुआ है. उसके ऊपर हमारी जो प्रकृति है वो सब चलती है. जो निसर्ग हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में, उसका जो आधार है वो ये सब नियम है. The laws, they govern the universe. The universe has been functioning with these laws for millions of years. All right, and we see them all around us. It is not कि वो कहाँ से invent होके आ गए हैं and suddenly one day we have to follow them. It is not. They are there everywhere, all around us. One very beautiful example Azadi sir had given, cooperation. I would like to give a few other examples. Interdependence. You know, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता. You know, this principle we see in all. The humans are actually dependent on interdependence. All right, they are meant to be together. They are meant to be together, united. So ये जो principle है, ये जो सिद्धांत है, हम nature में भी देखते हैं. Unity in diversity. Everything in the nature is so diverse, but it is united. Honesty. Everything, सब कुछ आप अगर नेचर में देखते हो, कुछ भी झाड़ हो, कुछ भी फल हो, वो पेड़ को वही फल आएगा, दूसरा फल नहीं आएगा. लाइक द एप्पल ट्री विल नॉट से अरे आज जब मैं ऑरेंजेस देखता हूँ, ऑरेंजेस कैसे आएंगे मेरे ऊपर. सो इट डजंट हैपन. So even honesty, all the elements in the nature also, they do their work very honestly, and we learn honesty from nature. Generosity. Nature is so generous. Everything is abundant. Of course, what the human beings do about it is a different question altogether, but it is there. Generosity is another principle that we learn from nature. So dear friends, then here, an essential condition for rectitude of conduct is consistent effort to live according to the spiritual, moral and ethical principles. अगर आपको सीधे रास्ते पे चलना है, तो ये जो सदाचरण है, सदाचरण का पालन करना है, तो इसके लिए आपको एक शर्त है, और वो जो शर्त है वो ऐसी है कि आपके जीवन में निरंतर आपको प्रयास करना है. क्या प्रयास करना है कि जो आध्यात्मिक और नैतिक जो भी तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनका पालन हमें हमारे दैनंदिन जीवन में करना है. ऐसा नहीं है कि हम बाहर गए हैं और हमें करना है. नहीं, खुद करना है. सबसे पहले खुद से उसकी शुरुआत करनी है. फिर आपकी फैमिली है, फिर आप जहाँ पे काम करते हो, और if you are a student, wherever you are learning, that environment which is there, and the entire society as well. So this is a very important condition that we need to fulfill to walk on the straight path. But how do we live according to these principles? ये बहुत ही कठिन है. ये इजी नहीं है किसी के भी लिए कि प्रिंसिपल्स है, हमें पता है प्रिंसिपल्स क्या है, तत्व है, ये सब हमारे सामने सिद्धांत है, पर उसके हिसाब से कैसे चलना चाहिए. सो फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव I would like to take you to the 5 elements of the capability building. So पहले हमने क्या किया कि moral capabilities, इसका मतलब क्या है, rectitude of conduct का मतलब क्या है, ये हमने पहले clarify किया. So now we have clarified the concept. Now we come to the skills. These are the skills. Now we come to the skill. To become a capable person, we need to first have clarity of concept, and then we need to learn certain skills. So this is the second element that we have come to. And this is a fundamental skill. किसी भी situation में कौन सा principle है, कौन सा सिद्धांत है, वो ढूंढ निकालना, it's a very important skill. ये मूलभूत कौशल्य उसे हम कह सकते हैं. So here friends, we have got a few situations over here. So हमें क्या करना है, ये situation में हमें कौन सा principle, there have questions have been asked, so you have to quickly identify which principles are probably involved, are violated. The questions have been given. So I'll just explain the situation. There is a poor family, and they've got boy and the girl. So what they do, they give education to the boy and the girl equally. So here, which principle has been followed? The principle of gender equality. Okay, love also has been followed. Now my question to all of you is, which principles are violated? Sorry to interrupt. Right to education was also involved there. Yes, Parag ji. Thank you so much, Parag ji.
Yes, yes. Right to education also was the another principle which has been followed. Now the next question is, which principles are violated by another family of little means whose decision is not to educate the girl? Can we have your answers, please? Yes, Parag ji. Yes, so I would like to request what Saili madam has mentioned. Now we have to identify the principles which are violated by this family, where they decide not to educate the girl. Okay, so the first answer we got is the equality. Yes, this is the one principle which is violated by this family. Okay. We would like to request all the participants, please, okay. Partiality is not a principle. Gender equality is a principle. And again, the opportunity is also not a principle. तो एक फैमिली के अंदर वो सिर्फ लड़की जो लड़का है उनको एजुकेशन देने का निर्णय लेते हैं, तो लड़की को नहीं देते. ओके, फ्रीडम. ओके. ओके, लिबर्टी. यस. एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है जो कि वो लड़की को एजुकेशन नहीं मिल रहा है लेकिन लड़के को एजुकेशन मिल रहा है. यस, राइट टू एजुकेशन इज देयर. तस्लीमा जी. Yes, Parag ji. Yeah, there's a very important principle. I think we are waiting for the participants. But Yes. if you like, I can give you the hint. The name of that principle, it starts with J. The first alphabet is J. Justice. Yes, Shashank ji. Absolutely. Yes, this is also the principle that is violated by the family. Yes, ma'am. Yes, Parag ji, you can explain the second two Yes. questions also. So the second situation is also there. Which principles are being violated when the decision is to give preference to the education of girl? तो यहाँ पे अभी वापस से एक सिचुएशन आई कि यहाँ पे इस केस के अंदर वो जो लड़की है उनको एजुकेशन देने का वो ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं. तो इस सिचुएशंस के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स वायलेटेड है, तो आपको ये लिखना है चैट बॉक्स के अंदर. उससे अभी यहाँ पे सिर्फ लड़की को एजुकेशन देने का सोच रहे हैं या उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं. So now in this situation which principles are being violated? We request you to please mention your answers in the chat box. Okay, gender equality. Gender equality, yes. All the participants should participate in this question answer. Actually, this is a very fundamental skill, isn't it, Paragji? Yes. Because all these situations, they are, you know, some of us or somewhere or the other, these are situations which are faced daily. There are other situations that we face daily in our lives, and we must understand which principle to be followed. Then only we can walk on the straight path, right? अगर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ का justice is a principle to be followed, we will not ask for justice, or we will not even think about justice, and then we will deviate from our walking from the straight path. So this is a very fundamental skill that we should be able to identify. तो आपने gender equality already कहा है, justice न्याय. जी मैडम. सो जैसे कि साइली मैडम ने बहुत एक दूसरा प्रिंसिपल है. यस मैडम, यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं. पार्टिसिपेट, जेंडर इक्वालिटी, यस, जस्टिस, वापस से. ओके, सो हम लोग तीसरी सिचुएशन की तरफ जाएं. एंड अगेन आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू. यस, डेफिनेटली Parag ji. यस मैम, या. Yes, we can go to third situation. Okay. The third. Yes. So अभी आपके सामने एक situation है कि यहाँ पे बताते कि which principles are being violated by a man who enters into dishonest business in order to earn money to educate both of his children, a boy and a girl.
तो यहाँ पे हमें ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि एक कोई इंसान जो आदमी अपनी फैमिली में जो दोनों लड़का और लड़की उनको एजुकेशन देने के लिए कुछ गलत तरह के ट्रांजिशन में फंसता है और पैसे अर्न करने की कोशिश करता है। तो इस सिचुएशन में कौन से प्रिंसिपल्स वायलेट हुए, आपको इस बारे में बताना है। Yes, I think Again, here, okay. ओके नितिन जी बताते हैं कि गिव हिम एडवाइस। हम लोग यहाँ पे नितिन जी एक स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल। सो हमें इसमें से प्रिंसिपल ढूंढ के निकालना है। यस, उसको एडवाइस देना जरूरी है, लेकिन हमको इस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है इसके बारे में सोचना है। ओके, ऑनेस्टी। यस, ऑनेस्टी। Very true. शिवराज इन्होंने बताया कि ऑनेस्टी ये प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ है। Yes, again, principles cannot be negative. So we have to, for example, honesty. Honesty agar violate hua to then the whatever happens is dishonest. Okay, so the principles have to be, yes, the consequences and all that, those are the consequences or the reasons, but principles have to be very positive. All right, great. Thank you so much. Thank you, Paraji. Since we don't have too much of time, we will go ahead. So this is a very fundamental skill, friends. Whether you're a student or you're a teacher, as a human being, we should be able to have the skill. We should be able to develop it in our daily lives so that we can empower, so that we can develop ourselves further. So, the light of truth shines. So, for example, dear friends, अभी जैसे पराग जी ने भी कहा कि कौन से प्रिंसिपल है, so, जो वायलेट हो गया है तो वो जो सत्य का प्रकाश है वो हमारे सामने उभर आता है। And then we know what should be our, so this is a very what किसी भी परिस्थिति में जो सिद्धांत छुपे हुए हैं वो आप ढूंढ पाए, ये एक स्किल है। But friends, imagine blindfold बांध दिया है, blindfold. What are these veils that stop us from seeing the light of truth? ये जो सत्य का प्रकाश है, हम किस वजह times we are unable to see the light of truth due to prejudice, जिसे हम पूर्वग्रह कहते हैं। So prejudices are of different types: racial, national, class, color, and education as well. And prejudices are all over the world. They are like a kind of a sickness, which has been spread all over the world. And prejudice is the reason that we are not able to see the light of the truth. So prejudice cannot see the things that are, because it always is looking for something that isn't. Okay. प्रेजुडिस क्या होता है, पूर्वग्रह क्या होता है कि वो सामने जो सत्य है वो देख नहीं पाता है, उसके पीछे क्या है, उस व्यक्ति के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में जो नहीं है वो ढूंढने की कोशिश प्रेजुडिस से की जाती है, और उसकी वजह से हमारे मन में पूर्वग्रह तैयार हो जाते हैं। प्रेजुडिस इज अ लर्न ट्रेट, यू आर नॉट बॉर्न प्रेजुडिस। जैसे हम किसी कुटुंब में जन्म लेते हैं तो हमारे पास पूर्वग्रह नहीं होता है, as we start growing up, we start
looking around, we start hearing other people talking, we start giving attention to our parents, our siblings, and then slowly in the society also, the experiences that we get, we start becoming prejudiced. There are some certain common examples of prejudice, like age ki wajah se. One person is there who is giving very valuable suggestion, but his suggestion is not taken because of his age, कि ये छोटा है, ये क्या बोल सकता है, you know, that is also kind of prejudice. कोई इंटरव्यू के लिए गया है but dressed very simply, so the other person will say the person who is dressed very well, he is capable. This is a prejudice, you know, but they are there all over the world. They are there, unfortunately, from in the families, in the schools, colleges, workplaces, and the society as well. So if we want to walk on the straight path, if we want to become morally capable, we should be able to live a life away from prejudice. We should not never have prejudice. For example, the third example is a very common example कि कोई चोरी हो जाती है तो the poorest person is said कि हाँ उसी ने ही लिया होगा, you know. So these are very common prejudices and a very bad situation which hampers moral development. It does not allow you to develop your own self or to be able to do something for others also. You shut down, you know, you close your development altogether. So all prejudices, whether of religion, race, politics, nation, have caused the world's sicknesses and is capable of causing the destruction of the whole human race. Imagine, dear friends, कि पूर्व ग्रह अगर हमारे पास रहता है तो the entire human race can be destructed. All these terrorist activities which are happening, wars which are happening, so many things, social cohesion जो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह prejudice है. आपको अगर if you are interested, you can visit the United Nations website also. A lot of information has been given about the barriers to social inclusion, prejudice कैसे होता है और discrimination कैसे होती है. Bahai Academy की एक international conference हुई थी about education for social cohesion. वहाँ पे भी बहुत सारे अनुभव जो है उनके ऊपर चर्चा हुई थी और वहाँ पे भी बहुत सारी डिस्कशन किया गया था कि पूर्व ग्रह कैसे हमारे जीवन से हमें नष्ट करना चाहिए और उसी से हम हमारा जो सीधा रास्ता है उसके ऊपर चल सकेंगे. So dear friends, we have an interesting activity for all of you right now. This is a poll question. This is just to understand prejudices, how it has been hampering our own lives as well. So Paragji, can you please share this poll question? Yes, ma'am. So, dear friends, this poll question will be open for next 30 seconds, and you have to. The question is that let me launch this poll. Okay. I hope yes, you all can see this poll, and you have to answer that. What type of prejudices have you faced in your personal life? This is a multiple choice question, and you can choose as many as you want as per your experience. And it will remain open for next 30 seconds. I Yes, request we all the request. participants should Yeah, ये सबको very true, very true. ये कुछ ही वक्त के लिए ओपन रहेगा, फिर बाद में इसका रिजल्ट भी हम लोग सब साथ में देखेंगे. Everybody should participate. और बहुत सारे options है actually. You can just scroll down and then Yes. you can vote. Yes. And multiple choice है तो आप ले सकते हो एक से भी ज़्यादा. अगर आपको कभी आपने फेस किया है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. This will give a general idea about what is happening in our lives, you know. हम सब लोग जो अभी हैं यहाँ. अभी अभी हम लोग उसको आखिरी के 30 सेकंड्स में अभी इसको बंद कर देंगे. But we have very less time. I request all the participants should participate quickly. Dear friends, it will give us a very great insight into the lives of, we are into education profession, you know, in the lives of people who are into education profession. But this is happening in everybody's life, at every personal life, somewhere or the other, we do face some kind of prejudice, and it will give us the actual picture. Yes, Paragji. Yes, ma'am. So we will end this poll and Okay. let us see these results. So now the results are here on your screen. Can you see the screen? Yes. Yeah.
Okay, so the 27% participants, they have mentioned that class-related prejudices they have faced in their life. Then after that, 25% of the participants are saying that religious-related prejudices they have faced in their life. Then the third most is about 23% gender-related prejudices. Mhm. Then 21% of the participants are saying that caste related, and 21% are also saying that they have not faced any prejudices so far. And then again, 13% of the participants are saying racial related, 16% are saying linguistic related prejudices. Then 14% are saying that the facial features related prejudices they have faced in their life. Okay, so we will stop this sharing, and let me request Sally madam, please go ahead. Thank you so much, Paragji. So, dear friends, and I'm really happy that people who have not faced any kind of prejudices, but they must have seen it. Maybe personally, in personal life, it might have not happened, but they must have seen it. So this is a malady. ये जो sickness है, वो हमें हमारे जीवन से दूर करने की जरूरत है. कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? So which is the principle that you can follow? जो कौन सा सिद्धांत है जिसका पालन करके जो prejudice है वो दूर कर सकते हैं? तो the answer to this is justice. न्याय. ये न्याय एक ऐसा सिद्धांत है जिसका आप अगर पालन करोगे तो आपके सामने ये जो लाइट ऑफ ट्रूथ है वो दिखेगा. क्योंकि न्याय अगर होगा तो आप कभी भी किसी के बारे में पहले से सोच के नहीं रखेंगे. आप ऐसा हमेशा आप कोशिश करेंगे कि इसमें सत्य क्या है ये ढूंढने की आप कोशिश करेंगे. आप किसी भी तरह का एक ब्लाइंड फोल्ड, एक पर्दा डाल के आप नहीं सोचेंगे. आप हमेशा ढूंढेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे और उसके ऊपर आप आपका जो भी कुछ विचार है उस तरीके से पर ऑलवेज वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पे आप चलेंगे. सो यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर वी वांट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू. आपको दिख गया होगा कि जस्टिस, एक छोटा लड़का है, उसको अगर आप उतना ही जो स्टूल दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल उतना ही देंगे तो ये जस्टिस नहीं है. उसको जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत है, उसको उतना मिलना चाहिए. जितना उसके हक का है उसको उतना मिलना चाहिए. तो जस्टिस होता है. और जस्टिस का हम अगर पालन करेंगे तो ये जो प्रेजुडिस है हम हमारे जीवन से हटाने की एक जो प्रयत्न है, प्रयास है, वो हम कर सकेंगे और उसे आई एम श्योर निकाल भी सकेंगे. सो डियर फ्रेंड्स, here as we always do, we always share some activity with all our participants. This is a very beautiful activity promoting rectitude of conduct. ये artistic activity है. आप छोटे छोटे bookmarks बना सकते हैं. बुकमार्क बना के जो कुछ कोटेशंस है, ब्यूटीफुल कोटेशन है जो सदाचरण के बारे में है, उनको आप तैयार कर सकते हैं. whether you're a student, you're a teacher, or I'm sure all of you do read. You can gift it to your friends, your family members, to your colleagues. और किसी से भी आप मिलते हो तो आप उनको ये दे सकते हो. इससे क्या होता है, आप सदाचरण को वृद्धिंगत कर रहे हैं. आप तो खुद ही सीधे रास्ते पे चल रहे हैं पर आप दूसरों को भी उद्युक्त कर रहे हैं. इसके लिए एक छोटी सी आर्टिस्टिक एक्टिविटी है. Really do this, and I'm sure when you also open your books and see this beautiful quotation, it will remind you to walk on the straight path. So thank you, dear friends. Thank you, Paragji. We have come to the end of this concept and skills.